Good morning students. Today we are going to start our new chapter, that is your chapter 6, Electromagnetic Induction. First of all, we will explain what is the word electromagnetic induction. Now, electro means electricity, magnetic means magnetism, means when electricity is induced by magnetism, that process is known as electromagnetic induction. Induction means to induce something. Now, in 1831, Faraday introduced the concept of electromagnetic induction. In this, he said that whenever the magnetic field lines or the magnetic flux through a circuit changes, आपके पास कोई भी circuit है, अगर उस circuit के around आप या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो या मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो, then a current is induced in the circuit. That concept is known as electromagnetic induction. Now, the magnetic flux, जो magnetic flux है in a circuit, that can be changed by four ways. First is moving magnet relative to the circuit, means the relative motion between the magnet and the circuit. वेदर या तो आप मैग्नेट मूव करो या सर्किट मूव करो या बोथ आर मूविंग विद डिफरेंट वेलोसिटीज, देन करंट विल बी इंट्रोड्यूस्ड. सेकंड इज चेंजिंग करंट इन नेबरिंग सर्किट. इन दिस यू हैव वन टू सर्किट्स आर प्लेस्ड अलोंग. जब आप एक सर्किट में करंट चेंज करोगे तो उसकी जो मैग्नेटिक, यू नो दैट अ करंट कैरिंग कंडक्टर हैज अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, और जब आप उसमें करंट वेरी करोगे, द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड दैट सर्किट विल चेंज, ड्यू टू विच द करंट विल बी इंड्यूस्ड इन द नेबरिंग सर्किट. नेक्स्ट इज करंट चेंज इन द सेम सर्किट. जब भी एक सर्किट है उसमें आपका करंट चेंज होता है, देन ऑल्सो एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड. लास्ट इज रोटेटिंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड. व्हेनेवर you rotate a coil in a magnetic field, a current is induced or a EMF is induced in it. Now, to explain the concept of electromagnetic induction, we have mainly two experiments. Now, first of all, experiment 1, you can see in this we have two coils. This is coil 1, this is coil 2. जो दोनों coils हैं, those are connected with the galvanometer. In this experiment, what we do? We take a bar magnet and we bring the north pole of the bar magnet towards the coil. और जब हम उस बार मैग्नेट को मूव करेंगे towards the coil, then there is a motion between the coil and the magnet, due to which a current is induced in the circuit and the galvanometer shows deflection towards right. And when we move the north pole of the magnet away from the coil, then the current is induced but in the opposite direction. From this experiment, it is clear that जब भी coil और magnet के बीच में there will be a relative motion, then a current will be induced in the circuit. और जो अगर motion opposite होता है तो जो current की direction है that will also be reversed. This is the second experiment. Now, in the experiment number 2, we have two coils. This is the primary of the coil and this is secondary of the coil. The primary of the coil is connected to the battery and the secondary of the coil is connected to the galvanometer. Now, in the figure A, first of all, the key is closed such that जो primary वाला circuit है, a current is flowing in this primary circuit. जब current flow करेगा in the primary circuit, then due to the flow of current जो magnetic field change होगी, उसके कारण a current will be induced in the secondary. और ये जो and the जो galvanometer है जो connected है in the secondary, it will shows a deflection. Now, जो जब भी हम जो डिफ्लेक्शन है वो कब आता है? Whenever we close the key, तो जब करंट बिल्डअप होगा इन द सर्किट, then only the current will be induced in the circuit. जब एक बार करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा, when steady currents flow और a continuous current flows in the circuit, फिर उसकी जो magnetic flux है that will also be become constant after some time, then no current will be
no current will flow or no current will be induced, उस समय the galvanometer will not show any deflection. After some time when we open the key, तो उसके बाद क्या है, जो फर्स्ट सर्किट है, जो प्राइमरी कॉइल है, उसमें जो करंट है it starts decreasing and then again there is a change in the magnetic field lines or magnetic flux. Then again a current will be induced in the secondary circuit and but now this time जो direction of current है induced in the secondary coil, it will be opposite to that when key is closed. जब आप की close करोगे उसकी deflection अगर towards right है, तो जब आप की open करोगे the deflection will be towards left. Now what is the conclusion here? The conclusion is while increasing or decreasing, अगर हम यहाँ करंट को इंक्रीज कर रहे हैं या करंट को डिक्रीज कर रहे हैं इन द प्राइमरी कॉइल, अ करंट इज इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल. अगर कॉन्टिन्यूअस स्टेडी करंट फ्लो कर रहा है उस केस में देयर विल बी नो डिफ्लेक्शन और नो करंट इंड्यूस. जो करंट इंड्यूस है वो कब आएगा? व्हेन आइदर यू आर इंक्रीजिंग द करंट or you are decreasing the current. Okay, now based on these two experiments, that is your experiment 1 जो था हमारा relative motion between coil and magnet, and the experiment 2 that is the primary and secondary coil experiment. On the basis of these two experiments, Faraday introduced two laws of electromagnetic induction. Now the first law is changing whenever, जब भी हम किसी सर्किट में मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं देन एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड. जब भी हम मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद दैट सर्किट को चेंज करेंगे तब देयर विल बी अ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सर्किट. और जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो किसके इक्वल है? नेगेटिव टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. मीन्स जो आपकी इंड्यूस्ड हो रही है ईएमएफ वो किसके इक्वल होती है? नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन द सर्किट. नाउ द सेकंड लॉ क्या है? द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट अपोजेस द कॉज दैट प्रोड्यूस इट. मीन्स जो डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट होती है इन द सर्किट वो कैसी होती है कि इट इज ऑलवेज ऑपोजिट. मतलब इट ऑलवेज अपोजेस द कॉज दैट प्रोड्यूसेस इट. मतलब जिसकी चीज के कारण वो करंट इंड्यूस हो रहा है इन द सर्किट, जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट होता है वो ऑलवेज उसको अपोज करती है. ओके स्टूडेंट्स, जैसे एक्शन रिएक्शन में होता था, जो एक्शन और रिएक्शन है दे एक्ट ऑन द सेम बॉडी बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, वैसे ही चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स जो है और जो इंड्यूस करंट है they are being acting on the same body but they oppose each other. Now these are the two laws of electromagnetic induction. In the next lecture we will have the analysis of these two laws. Okay students, that's all for today.